Once, Johan Cruyff said, if you have any second thoughts to play for Barcelona, you are not of any service to us. भाई घोर कलयुग आ चुका है यार. Guys, just imagine, you get an opportunity that you can be one of the greatest players of all time. You can be a part of one of the greatest clubs of all time. And you reject them. You choose Atletico Bilbao. Control. भाई निको विलियम्स यार. भाई ये बंदा पागल है. He rejected Barcelona, Bayern Munich, Arsenal, PSG just to sign a 10-year deal with Atletico Bilbao. तो साला होना ही था. बारसा वालों यार, ये क्या हो गया? क्यों हो गया? कब हो गया? कैसे हो गया? सवाल अनेक, जवाब एक. निको विलियम्स rejected Barcelona for Atletico Bilbao. Bro, I cannot believe this. जो क्लब चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती है, भाई यूरोपा लीग जीत नहीं पाती है, दैट क्लब मैनेज निको विलियम्स टू प्ले फॉर देम फॉर नेक्स्ट 10 years. ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है. भाई दिस इज डर्टी पॉलिटिक्स. एंड गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग. एक प्लेयर he gets name, fame, popularity just on the basis कि उसका क्लब कितना बड़ा था. You can see David Beckham when he joined Manchester United, Cristiano Ronaldo when he joined Manchester United from Sporting, Neymar Jr. when he joined Barcelona from Santos. Bro, because of the name, fame of these clubs, भाई लोग जान पाए who was Neymar, who was Cristiano. भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई. का 2 minute silence यार, 2 minute silence for Barcelona यार. भाई बहुत बुरा हुआ इनके साथ. Bro, Nico Williams and his agent used Barcelona. They literally used Barcelona, not once but twice, just to earn 2x, 3x money from Athletic Club. वो चूना लगा दिया. Bro, what a masterstroke from Nico Williams and his agent. He was getting good offers from Arsenal, from Bayern Munich, from PSG, and he knew what is the right time to play his card. And let me tell you one fact. भाई रातों रात 10 साल का decision with a club भाई नहीं हो सकता. Bro, if you are working somewhere, you cannot give a commitment for 10 years, 20 years. भाई day by day, year by year आप progress करोगे. And this move was pre-decided, pre-planned by Athletic Club, by Nico Williams, because they knew that Barcelona 1:1 rule में नहीं आ पाएगी. They would not be able to register Nico Williams. And to an extent I understand that Nico Williams sure नहीं था that Barca उसको register कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. He was in that dilemma, he was in that situation. I get it यार, but भाई इतना ड्रामा क्यों? Why so drama? Why so much news that Nico Williams desperately wants to play for Barcelona? वाह क्या एक्टिंग कर रहा है. भाई बेचारे लमीन यामाल यार, उसके बारे में सोच लिया होता. भाई अब ये पागल जी नहीं पाएगा. एंड ये सब छोड़ो यार, पहले इस बच्चे के हाथ से फोन लो. सुना क्या? ये भी मेरी गलती है. Bro, to be honest यार, now my respect for Dani Olmo, for John Garcia भाई बढ़ चुका है यार, बहुत बढ़ चुका है. Bro, in the case of Dani Olmo, भाई बार्सिलोना कोई रजिस्ट्रेशन गारंटी नहीं दे पा रही थी. And then also Dani Olmo waited until the final week of the transfer window. He rejected his move to Manchester City, and guys, he finally joined Barcelona. This is commitment. This is love for his club. And now in the current scenario, Barca के पास ज्यादा options नहीं है in the transfer market. भाई they have already signed Rooney Bargi, and now hopefully they can use the money to sign Grimaldo या Dumfries या Rashford on loan, because Luis Diaz का move to Barcelona is most probably not possible. But bro, seriously, भाई अभी तक I cannot imagine that एक प्लेयर ने रिजेक्ट किया बायर्न म्यूनिख को, बार्सिलोना को, आर्सेनल को, just to join Athletic Club. भाई घोर कलयुग आ चुका है यार, घोर कलयुग आ चुका है.